श्री घटिकाचल हनुमत स्तोत्रम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अतुलित बलशाली वीरों में वीर महावीर हनुमान जी का एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ स्तोत्र जिसका नाम है घटिकाचल हनुमान स्तोत्र। यह शक्तिशाली घटिकाचल हनुमान स्तोत्र जीवन से सभी संकटों को दूर करने और आपको जीवन की हर बाधाओं से बचाने की शक्ति रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से या श्रवण करने मात्र से हनुमान जी भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन को आनंद से भर देते हैं। तो आइए श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिव्य स्तोत्र को श्रवण करते हैं। अथ श्री घटिकाचल हनुमत स्तोत्रम। शंख चक्रधरं देवं घटिकाचल वासिनं योगारूढ़ं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरद्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढ़ं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरद्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। यदं स्तोत्रं पठे नित्यं
प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं
गदाधर करोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं
इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं।
दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकम्। वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं। पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा
देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं
नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं
पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं
लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्थं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यपुष्कं च सागरोत्तारकारकं शमीरवेगं देवेशं वन्देह्यमितविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः।